Hello and welcome to Market Today. I am Siddharth Zarabi and joining me now is R. Shankar Raman, the President, Full-Time Director and CFO. It's made metro ridership less interesting because it has taken away the women from the compartment. Hyderabad Metro, my understanding is that the free bus service had an impact as far as ridership is concerned. And since you outlined a detailed plan, do you think at some point the free bus offered by the state government will kind of even out as far as your ridership numbers are concerned? It's made metro ridership less interesting because it has taken away the women from the compartments. And since the women are occupying the buses and the number of buses has not increased, the men from buses are moving into the railway wagons. So there is a gender distribution that is happening in the transportation system. Buses are being used by women who pay nothing, and metro is used by men who pay 35 rupees on an average per ticket. But we do think it's not sustainable because some of these SOPs, which are done on the back of political promises, etc., is not going to help the state finances, because what is the point in making the Transport Corporation of Telangana or Hyderabad go bankrupt? There's no fun in doing that. And secondly, these are depreciable assets because every 5 years the fleet of buses needs to be invested in. So where is the money going to come from unless the users pay? So somewhere this public-private partnership works at cross purposes. Private capital is required to put a modern zero polluting transport system. At the same time, we are spending money in making people use the polluting buses. So it's a bit of a conflict there, but I guess the political ideology and the economic interest and the ESG, it takes effort to align all of this. It doesn't naturally do it on its own. पॉलिटिकल पार्टियों ने चुनाव जीतने के लिए खजाने खाली करने चाहिए क्या? सैद्धांतिक मुद्दा ये है। क्या मुझे खजाना लूटाने का अधिकार है क्या? मुझे एम्पावरमेंट के लिए योजनाएं बनाने का हक है, लेकिन चुनाव है इसलिए मैं लूटा दूं, ये तरीका कितना उचित है, ये सोचने का विषय है। और दुनिया में जिन जिन देशों की ये हालत हुई है वो हमारे पास उदाहरण है कि भाई हमने अब देखिए क्या होता है। आप एक शहर में मेट्रो बनाते हैं और उसी शहर में चुनाव जीतने के लिए कहते हैं कि हम महिलाओं को बस में फ्री ले जाएंगे। मतलब आपके मेट्रो के 50% पैसेंजर आपने ले लिए, तो मेट्रो वायबल नहीं होगी। अब भविष्य में मेट्रो बनेगी कि नहीं बनेगी, चिंता ये है। ये समझ कोई इस रूप में कोई चिंता चर्चा नहीं करता है। अब हम पॉलिटिकल तू मैं पे चले जाते हैं, मुझे वो नहीं करना है जी। मैं बिल्कुल कॉन्क्रीट बात करता हूँ कि आप बस में, इसके कारण क्या हुआ, एक तो ट्रैफिक को भी प्रॉब्लम किया, एनवायरनमेंट को भी प्रॉब्लम किया, आपने मुफ्त का कर दिया और इधर मेट्रो आपने खाली कर दी। अब वो मेट्रो कैसे आगे बढ़ेगी, देश कैसे आगे बढ़ेगा?